Welcome or welcome back to my channel. Welcome to a new video. In today's video, we are giving a fresh start to our accounting journey. We are starting with the practical portion of our accounting syllabus. So let's start. CA Foundation, Paper 1, Principles and Practice of Accounting, Chapter 2, Accounting Process, Unit 1, Basic Accounting Procedures, that is, the journal entries. The journey of accounting starts with the journal entries. The passing of journal entries means the recording of a transaction in the books of accounts. So, in our Unit 1, that is the Chapter 1, we learned about accounting. What is accounting? We learned in Chapter 1 videos. So, what do we mean by accounting? Accounting. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the accounts information, the financial information of a business organization. So, let's repeat again. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating financial information of a business organization. So, in today's video, in our Unit 1 video, we are going to start about this, the recording portion. We are going to record the business organization's transactions. So, for your information, this recording is done in journal or through journal entries. The recording is done. The classifying of the business transactions are done through ledger accounts. Mark my words, the ledger accounts classify the business transactions. The next is summarizing. The summarizing is done in trial balance. There is a statement that is prepared named as trial balance, which is used for summarizing the transactions of a business organization. Then comes analyzing. To analyze a business, we prepare the profit and loss account. Then interpreting. The interpretation of the financial information of a business organization is done through a statement named balance sheet. And then we prepare the financial statements that communicates with the users of the financial statements. The profit and loss account and the balance sheet forms up this financial statement. आई होप इट्स क्लियर. एक बार हिंदी में रिपीट करते हैं. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है. किसका आर्ट? रिकॉर्डिंग का, क्लासिफिकेशन का, समराइज का, एनालिसिस का और इंटरप्रेट का. रिकॉर्ड किसको करना पड़ेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. एक बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, एनालाइज भी करना पड़ेगा और इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा. ये यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज थ्रू जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज के यूज करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो है सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन बुक्स which contain financial records and act as a evidence of transactions. जो भी डॉक्यूमेंट एक एविडेंस के तरह काम करे,
किसका एविडेंस, एक ट्रांजैक्शन का एविडेंस के हिसाब से काम करे, या फिर एक डॉक्यूमेंट जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंटेन्ड हो या फिर जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो, उसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं. All documents which act as an evidence of a transaction or contains financial records are known as source documents. So, can you provide an example of a source document? Yes, if you guessed it correct, this is the thing. An invoice. An invoice is a source document. Any invoice contains items, the financial items, which show us or acts as an evidence of transactions. This invoice is a source document. So, what is a source document? Source documents are all documents in the books which contain financial records and act as an evidence of transactions. Our next concept is book of original entry. A book of journal is called a book of original entry. So, and a ledger account. Mark this word, account. An account is something that we will discuss in this chapter or this unit itself. It is an interesting portion, but it's upcoming, not now. Book of original entry and ledger account. Purchase day book, cash book, sales book, sales day book, purchase return book, accounts. So, what do we mean by the book of original entry and ledger accounts? Accounts where information relating to a particular asset or liability, capital, income, or expense are recorded. Book of original entry or a journal account is an account where information or transaction relating to an asset, a liability, a capital, a income, or an expense are recorded. Recorded where? Recorded in the books of accounts. Next, our next topic, trial balance. What is a trial balance? A trial balance contains the totals of various ledger accounts. It contains the total of various ledger accounts and act as a preliminary check on accounts before producing final accounts. Before the production of final accounts, a preliminary check is made whether the accounting process is correct or not, and it is done through a statement that is named as trial balance. So, there are mainly two types of accounts. One is personal account and other is impersonal account. Within personal account, natural account, artificial account, and representative account. We will discuss this in detail in this video itself, but in our upcoming time. And impersonal account contains real account, nominal account. First of all, let's start our portion, then we will be continuing or understanding those. Our first explainable topic is double entry system. What is a double entry system? Double entry system is a system of bookkeeping, that is, a system of recording transactions in the books of accounts. A double entry system of accounting is more than 500 years old. The system of double entry for bookkeeping is 500 years old. Luca Pacioli. This is a person, Luca Pacioli. He, in his book, he was an Italian friar and mathematician, published his book, whose name I am not able to pronounce properly, but whose English translation is everything about arithmetic, geometry, and proportions. The first book that described a double entry accounting system.
Double entry system of bookkeeping has emerged in the process of evaluation of various accounting techniques. It is the only scientific system of accounting. Double entry system is the only scientific system of accounting. According to it, every transaction has two-fold aspects. According to the double entry system, every transaction has a two-fold aspect, a debit and credit, and both the aspects are to be recorded in the books of accounts. As per the double entry system किसके लिए? Double entry system of bookkeeping. As per the double entry system of bookkeeping, every transaction has two aspects. What are those two aspects? Debit and credit. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर दो नजरिया होते हैं एक ट्रांजैक्शन का. उस दो नजरिया का नाम है डेबिट और क्रेडिट. और एक ट्रांजैक्शन के लिए दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों ही डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों को ही रिकॉर्ड करना जरूरी है. For every transaction, there are two aspects. One is debit and another is credit. And while recording one transaction, these two aspects must be recorded in the books of accounts. Therefore, in every transaction, at least two accounts are affected. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एटलीस्ट दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं. ये अकाउंट क्या है? अकाउंट हम लोग समझेंगे इस नेक्स्ट पोर्शन में. हम लोग समझेंगे अकाउंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक का खाता. बैंक का खाता के जैसा हम लोग का, मेरा एक डिफरेंट अकाउंट है, मेरा पेरेंट्स का एक डिफरेंट अकाउंट है, आपका एक डिफरेंट अकाउंट है. ऐसे ही अकाउंट्स होता है, डिफरेंट एसेट, डिफरेंट लाइबिलिटी, इनकम का, एक्सपेंस का, सबका सेपरेट सेपरेट अपने नाम में जिसको अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग अकाउंट कहते हैं. हर एक एसेट के लिए, हर एक लाइबिलिटी के लिए, हर एक इनकम के लिए या फिर एक्सपेंस के लिए जो भी खाता लिखा जाता है उसे हम लोग अकाउंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, either the cash balance will be reduced or a liability to the supplier will arise. एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं एक फर्नीचर खरीद रहा हूं. एक फर्नीचर को खरीदने से आइदर मैं कैश या फिर बैंक से पेमेंट कर सकता हूं. कैश या फिर बैंक एक एसेट है, मेरे लिए एसेट है ना. जब एक फर्नीचर मैं खरीदूं, फर्नीचर भी एक एसेट है. एक फर्नीचर या फिर एसेट खरीदने से मेरा एक एसेट चला जाएगा या फिर और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा. लाइबिलिटी क्या हो सकता है? अगर मैं उस फर्नीचर को लोन में लूं तब उस लाइबिलिटी, वो जो लोन है वो लाइबिलिटी बन जाता है. इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट होता है. फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने एसेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा और मैंने कैश या फिर बैंक से पेमेंट किया. कैश या फिर बैंक से पेमेंट करने से एसेट घट जाएगा और फर्नीचर एक एसेट है इसीलिए एसेट बढ़ जाएगा. यह बनता है टोटल एक ट्रांजैक्शन. एक टोटल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये होता है. हो गया ना टू फोल्ड इफेक्ट. एक एसेट बढ़ा और एक एसेट घटा, हो गया टू फोल्ड इफेक्ट. Our next example, I purchased a machinery. For example, rupees 10 lakh. But I did not pay in cash or bank. I took a loan. In that case, a liability will generate. Loan is a liability, an asset increased, and that is why a liability also increased. And that is also, this completes a transaction. One asset increase and one liability increase completes a transaction. And that is why two-fold aspect is also proved now. एक एसेट बढ़ा, एक लाइबिलिटी भी बढ़ा, टू-फोल्ड एस्पेक्ट हो गया ना. इसीलिए कहते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए टू एस्पेक्ट्स होता है. एक ट्रांजैक्शन
दोनों अकाउंट को एटलीस्ट दो अकाउंट को अफेक्ट तो करता ही है। ऐसा बहुत ट्रांजैक्शंस हम लोग देखेंगे जब 3 या फिर 4 अकाउंट अफेक्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो एक ट्रांजैक्शन के लिए अफेक्ट होता ही है। यही है डबल एंट्री सिस्टम का पूरा कहानी। It may be defined, the double entry system may be defined as a system which recognizes and records both the aspects of transactions. Double entry system is a system of accounting which recognizes and records both the aspects of a transaction. This system has proved to be systematic and has been found of great use for recording the financial affairs of all institutions requiring the use of money. Our next topic is advantages of double entry system. What are the advantages of a double entry system? एक डबल एंट्री सिस्टम को यूज करने से क्या क्या फायदा होता है? This system affords the use and the under-mentioned advantages. What are the advantages? Advantages of what? Double entry system. By the use of this system, the accuracy of accounting work can be established. डबल एंट्री सिस्टम को यूज करने से एक्यूरेसी मेंटेन होता है या फिर एस्टैब्लिश किया जा सकता है। एक एक्यूरेसी, एक अकाउंटिंग वर्क जो एक्यूरेट है उसको हम लोग दिखा पाते हैं। किसके जरिए? ट्रायल बैलेंस को यूज करके। यूजिंग अ ट्रायल बैलेंस we can establish the accuracy of an accounting work only in the case of double entry system. Number 2 advantage is the profit earned or loss suffered during a period can be ascertained together with details. एक प्रॉफिट क्यों क्यों हुआ या फिर एक लॉस क्यों हो रहा है उसका पूरा डिटेल्स हम लोग चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। The reason or the details behind a profit or a loss can be checked through the use of double entry system. So profit earned or loss suffered during a period can be asserted along with details. Third benefit of using double entry system, the financial position of the firm or the institution concerned can be ascertained at the end of each period. एक बिजनेस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन हर एक फाइनेंशियल पीरियड के खत्म होने से हम लोग असर्टेन कर सकेंगे विद द यूज ऑफ अ स्टेटमेंट नेम्ड बैलेंस शीट। एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, उसको यूज करके एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग मेजर या फिर असर्टेन कर सकते हैं। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ascertained with the use of a statement named as balance sheet. Why? Because the business is using a double entry system of accounting. Our next advantage is the system permits accounts to be kept in as much details as necessary. Accounts में जितना भी details necessary है, जितना भी details required है, वो सब details हम लोग double entry system के वजह से रख पाएंगे and therefore affords significant information for the purposes of control. जितना भी इंफॉर्मेशन जब जब रिक्वायरमेंट आएगा उस इंफॉर्मेशन का तब तब हम लोग यूज कर पाएंगे। Our next advantage and the last advantage is result of one year may be compared with those of previous years and reasons for the change may be ascertained. एक ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएंगे डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके, और उस कुछ भी अगर चेंज है, कुछ भी अगर डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस का प्रॉपर रीजंस भी हम लोग देख पाएंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंट। व्हाट इज एन अकाउंट? हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना व्हाट इज अकाउंट, एक अकाउंट क्या होता है। यहां पे एक्सप्लेनेशन आ गया अकाउंट का। अकाउंट के
अकाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल या फिर एक सिनेरियो में डिजाइन करूंगा, वहां पे उसको यूज करके आप शायद समझ जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप आप आपके पेरेंट्स से 10 रुपीज मांगे, या फिर आज सुबह आपके पेरेंट्स आपको 10 रुपीज दिए और आप डिसाइड किए कि इस रुपीज 10 का नोट से आप कुछ बिजनेस करेंगे। आप गए एक पेन के शॉप में, एक पेन शॉप में गए और 2 पेन्स खरीद लाए, 2 पेन्स ऑफ रुपीज 5 ईच। 2 पेन्स ऑफ रुपीज 5 ईच, आपका रुपीज 10 खर्चा हो गया, आपका रुपीज 10 वहां पे चला गया। और अब क्या हुआ, आप उस पेन के दुकान से लौट आए और वो जो पेन है, 2 पेन्स है, उसे रुपीज 7 में बेच दिए, रुपीज 7 पर पेन में बेच दिए। आपका इनकम क्या हुआ, आपका इनकम हुआ रुपीज 14, 14 रुपीज का आपका इनकम हुआ। ये हो गया आपका एक्सपेंस, ये खर्चा रहा रुपीज 10 और इनकम हुआ रुपीज 14। यहां से आप तो डिसाइड या फिर कैलकुलेट कर पाएंगे आपका प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट साफ दिखाई दे रहा है कि रुपीज 4 आपका प्रॉफिट है, लेकिन हम उतना दूर नहीं जाएंगे। आप समझ लीजिए आप एक बिजनेस अकाउंटेंट हो, एक बिजनेस का अकाउंटेंट हो और ये आपका ट्रांजैक्शंस है। ये रुपीज 10 को रिसीव होना, रुपीज 10 का रिसीव होना, रुपीज 10 का पेमेंट करना, उसके बाद रुपीज 14 का इनकम करना, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनकम हुआ रुपीज 10, देन पेन खरीदा, हो गया मेरा माइनस रुपीज 10, फिर पेन को सेल करके हो गया मेरा प्लस रुपीज 14। ये तो रहा अपना एक ट्रांजैक्शन या फिर एक दिन का हिसाब किताब, ऐसे आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चीज अगर हर दिन, एक साल में हर दिन करोगे, अब आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। इट वुड बिकम cumbersome and it would become quite difficult to handle such a book of account. It would become hefty. वो जो बिग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें आप इस तरीके से अकाउंटिंग करोगे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंडल करने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे किससे क्या हुआ है, कब क्या हुआ है, और बुक्स का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन में आए हैं। हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्या है, अकाउंट ऐसे टी शेप में दिखने वाला एक फॉर्मेट है। ये टी शेप में दिखने वाला एक फॉर्मेट है। आप डिसाइड किए जो भी कैश मेरे पास आएगा, जितना भी कैश इनफ्लो होगा, जितना भी कैश मेरे पास आएगा, वो आप इस साइड पे लिखोगे, और जितना भी कैश आपसे चला जाएगा, आपके पॉकेट से चला जाएगा, आप राइट साइड में लिखोगे। ये आपने डिसाइड किया। अब हम लोग देखते हैं, आज सुबह हुआ और आपको 10 रुपीज मिला, 10 रुपीज मिला आपके पेरेंट्स से। ये 10 रुपीज आपका इनकम है, इसीलिए आप लेफ्ट साइड में लिख दिए। फिर आप डिसाइड किए कि आप 2 पेन खरीदेंगे। 2 पेन खरीदने के वजह से आपका 10 रुपीज का नुकसान या फिर लॉस हो गया, या फिर 10 रुपीज का आउटफ्लो हो गया। 10 रुपीज आपके पॉकेट से चला गया, हो गया, आप इसीलिए राइट साइड में लिख दोगे।
लिख दिए आप। इसके बाद वो जो 2 पेन है उसे आप बेच दिए 7 रुपीज में। वो जो पेन है उसे आप लोग 14 रुपीज इनकम किए, ₹7 ईच। अब क्या हुआ? अब हो गया आपका दिन खत्म। इसके बाद ये जो फॉर्मेट है इसका आप डिसाइड किए, आपके पास रिमेनिंग बैलेंस क्या रहेगा, आप उसे निकालोगे। आपका बैलेंस क्या रहेगा। इस टी शेप का जो अकाउंट है उसका एक रूल है, या फिर आपने एक रूल बनाया कि ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये जो लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है ये दोनों इक्वल रहेगा, ताकि आप जो आपके पास कैश है उसका प्रॉपर हिसाब किताब निकाल पाए। ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ₹10 आपका इनकम हुआ था आज सुबह, और पेन बेच के आपका ₹14 का इनकम हो गया। आपके पास टोटल 24 रुपीज का कैश इनफ्लो हुआ, या फिर आपके पास कैश इनकम ₹24 हो गया आज के दिन में। लेकिन कैश का आउटफ्लो 10 रुपीज हुआ था। लेकिन एज पर रूल आपने जो जिस रूल को बनाया था उसके हिसाब से ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसीलिए 24 यहां से आपको निकल आएगा। यहां से आप निकल पाओगे आपके पास कितना रुपया, कितना पैसा आपके पास रह गया है, कितना पैसा आपके पास बच गया है, वो आप निकाल पाओगे। कितना रुपया आपके पास है? ₹14 आपके पास है बैलेंस। इसको हम लोग कहेंगे, ये जो अमाउंट निकला इसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये जो ₹14 है इसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये तो हो गया पूरा कैलकुलेशन। यहां से आप निकल पाओगे, आपका ₹4 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ये जो अकाउंट हुआ, ये जो अकाउंट आपने पूरा बनाया, इसका नाम दोगे आप कैश अकाउंट। जैसे आपके अकाउंट में आपका नाम होता है ना, आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम होता है, आपके मम्मी के नाम, बैंक अकाउंट में मम्मी का नाम होता है। इसी तरीके से ये कैश का अकाउंट है, इसीलिए इसका नाम होगा कैश अकाउंट। कैश का अकाउंट है, इसीलिए कैश अकाउंट में कैश का जो भी इनफ्लो होगा या फिर जो भी इनकम होगा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। क्यों? कैश एक एसेट है, इसीलिए आप समझ लीजिए कैश जो भी एसेट है, एसेट का कुछ इनकम होने से वो लेफ्ट साइड में आता है, और कुछ भी एसेट का चला जाने से या फिर एसेट जब आउटफ्लो होता है, एसेट का जब लॉस होता है, तब वो राइट साइड में आता है। आपके पास जब कैश एक एसेट के रूप में आया, आप लेफ्ट साइड में लिखे। जब कैश एक एसेट के रूप में आपसे चला गया, आप राइट साइड में लिखे। फिर आपके पास कैश आया 14 रुपीज, आप लेफ्ट साइड में लिखे। इसके बाद आज का दिन खत्म हो गया, आपके पास रह गया ₹14। ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस रह गया। ये बन गया एक कैश अकाउंट। ये है स्टोरी एक अकाउंट का, जो मैं एक कैश अकाउंट के एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। फिर आते हैं, आपके पास एक लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बोरोड ₹10 फ्रॉम योर फ्रेंड। ₹10 फ्रॉम योर फ्रेंड। फ्रेंड से लोन लिया है आपने ₹10। ये जो लोन है ये एक लायबिलिटी है। लोन एक लायबिलिटी है ना, इसीलिए इस लोन को आपको चुकाना पड़ेगा। इस लोन को जो आपके पास लायबिलिटी है,
पहले आप सिंपल तरीके से अकाउंट करेंगे। लाइबिलिटी है ₹10। उसके बाद आप कैश, उस लाइबिलिटी को मिटाने के लिए आप कैश पे कर दोगे। इसके लिए क्या होगा, एसेट घट जाएगा और लाइबिलिटी भी घट जाएगा। आप कैश पे कर दिए ₹10। उसके बाद लाइबिलिटी या फिर ये जो लोन है ये ₹0 हो गया और आपके पास ₹10 ही कैश कैश था। आपके मम्मी ने आपको ₹10 ही दिया था, इसीलिए कैश भी 0 हो गया। फ्रेंड का लोन भी 0 हो गया और आपके पास कैश भी 0 हो गया। इसी को, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया है ना, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट के तरीके से समझेंगे। फर्स्ट हम लोग बनाएंगे एक कैश अकाउंट और हम लोग बनाएंगे एक लोन अकाउंट। आपका जो फ्रेंड का लोन था उसे हम लोग एक अकाउंट, हर एक अकाउंट का, हर एक एसेट का, हर एक लाइबिलिटी का सिंगल सिंगल अकाउंट होता है, सेपरेट सेपरेट अकाउंट होता है। जैसे बैंक अकाउंट है सबके नाम पे अलग अलग से, ऐसे तरीके से हम लोग एक एसेट का, एक लाइबिलिटी का, एक इनकम का या फिर एक एक्सपेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। हो गया ये। आपके पास हम लोग क्या कहते हैं, अगर कुछ एसेट होगा, एसेट का क्लोजिंग या फिर ओपनिंग होगा, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होने से वो आएगा किस साइड में, राइट साइड में। इसका मतलब एसेट का जब ओपनिंग बैलेंस हो वो लेफ्ट साइड में आएगा। पिछले एग्जाम्पल में जब क्लोजिंग बैलेंस रहा था, कैश एक एसेट था, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस जो है वो राइट साइड में था। लेकिन यही अगर अब ओपनिंग बैलेंस हो जाए तो कैश रहेगा कहां पे आएगा, वो लेफ्ट साइड पे आएगा। आपके पास कैश है, मम्मी ने कैश दिया ₹10, लेकिन आपके पास लोन है एक, आपके पास लाइबिलिटी है। कैश या फिर एसेट अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो एक लाइबिलिटी को होने से बिल्कुल उल्टा होगा। एक एसेट एक लाइबिलिटी से पूरा उल्टा है ना, एक एसेट जस्ट एक मिरर है लाइबिलिटी का, या फिर एक लाइबिलिटी एसेट का पूरा एक मिरर है। इसीलिए अगर कैश या फिर एसेट होने से आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, एक लाइबिलिटी या फिर लोन होने से आप राइट साइड में लिखोगे। आपके पास ₹10 का है लोन और ₹10 है कैश। इसके बाद आपसे ₹10 निकल जाएगा, ₹10 आपका नुकसान हो जाएगा। आपसे ₹10 जो है वो चला जाएगा, चला गया। कहां जाएगा, जाएगा इस लोन में। अगर एसेट साइड में आप कैश जाने का एंट्री राइट साइड में करते हो, कैश जा रहा है उसका एंट्री राइट साइड में करते हो, तो कैश जाने का एंट्री एक लाइबिलिटी साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा, इसीलिए यहां हो जाएगा 10। अब इस अकाउंट को, इस दोनों अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। और आपके बिजनेस के लिए या फिर ये अकाउंटिंग के लिए भी नियम है, लेकिन अब मान लेते हैं आपके बिजनेस के लिए क्या रूल है, ये साइड और ये साइड हर समय इक्वल रहेगा, ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगा। तो फिर 10 10, यहां पे भी 10 और यहां पे भी 10 इक्वल हो गया। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहेगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस, एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड रहता है। और सिमिलरली, ताकि एक लाइबिलिटी, एक एसेट का उल्टा है, एक लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0 0। ये हो गया एक अकाउंट के तरीके से, एक अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन को शो करना। कैश को पे करिए, आपने कैश को पे किए एक लोन को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर एक लोन को मिटाने के लिए आप कैश पे किया, कैश पे करें। वो एक टोटल, ये जो है, ये टोटल जो है ये एक ट्रांजैक्शन बन गया। ये टोटल
एक ट्रांजैक्शन हो गया और हम लोगों को पता था कि एक ट्रांजैक्शन से मिनिमम 2 अकाउंट्स अफेक्ट होता है, इसीलिए ये दोनों को मिला के, ये भी मिला के और ये भी मिला के एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये रहा स्टोरी। अब हम लोग स्टडी मटेरियल को यूज करके समझते हैं। अकाउंट। We have seen how the accounting equation becomes true in all cases. हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था अपने चैप्टर 1 के वीडियो में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही है एक अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करके हम लोग समझेंगे अपना अकाउंट। A person starts his business with say rupees 10 lakh. 10 lakh is the capital and cash are both 10 lakh. 10 lakh cash he has introduced. And that is why the capital of the business would become rupees 10 lakh and also the cash would become 10 lakh. Cash is an asset. Asset will become 10 lakh, capital will become 10 lakh, and thus this equation is proved to be correct. Asset equals to liability plus capital. Liability is, in this case, the liability is 0 and the capital is 10 lakh. Capital is 10 lakh and the asset is 10 lakh, but liability is 0, and thus this equation is proven to be correct. Transactions entered into by the firm will alter the cash balance in two ways. One will increase the cash balance. One type of transaction will increase the cash balance and other will reduce it. Another type of transaction will reduce the cash balance. That is payment for goods purchased, payment of salaries, payment of rent. These are all expenses. This will result in the reduction in cash balance. The cash balance will go down and others will reduce it. That is the sales of goods, collection from customers will increase it. The payment for goods purchased, payment of salaries, payment of rent will reduce the cash balance, and receiving of payment from customers, receiving of money from customers, or selling goods for cash will increase the cash balance. And that is why there are two types of transactions, which will decrease the cash balance and other one will increase the cash balance. We can change the cash balance with every transaction, but this will be cumbersome. Instead, it would be better if all the transactions that led to an increase are recorded in one column and those that reduce the cash balance in another column. So, as we have learned in our example, as we have seen in our example, we are recording the receipt. We are recording the incomes or receipts in one column and the revenue and the expenses or outflow of cash in another column. This forms one account. We are recording the receipts here and the payments over here. So two columns are made to record one asset. Then the net result can be ascertained. The net result, the closing balance was ascertained from here. If
we add all the increases to the opening balance of cash and then deduct the total of all decreases. We shall know the closing balance. We learned about the closing balance over here. In this manner, significant information will be available relating to cash. Cash was an asset and thus all receipts or plus was here and all minus or payments were in the right hand side, and which will be opposite in case of a liability. The two columns which we referred above are put usually in the form of an account called the T form. Yes, this account looks like a T. This account prepared looks like a T, and that is why we say it is a T formed account. It is in the form, or it is in the shape of a T. The two columns which we referred above are put usually in the form of an account called T form. This is illustrated below. So here we are saying the cash account as we have seen in case of our example. Right side is recording all the increases or receipt, and the left side is dealing with all the increases, that is the receipt, and the right hand side is dealing with all the decreases or the payments. So as we all know, as we have seen in the example given by me, the opening balance as a cash is an asset will be in the left hand side, and that is why the opening balance, these are all the increases. The cash balance is increasing. All this is the plus one, the cash balance increases, and all this is the minus one, the cash balance decreases. After the opening balance is added to all these and these all are deducted, let me give this the color of my example. We were showing all the outflow in the red color, that is why all this will be in red, all this minus. So opening balance plus incomes minus payments equals to closing balance. So when opening balance, along with opening balance, these all are added and these all are subtracted, the closing balance is generated. The closing balance is shown. This is the story of an asset, of an account. Since each T account shows only amounts and no transaction descriptions, we key each transaction, we place a key of each transaction in some way, such as numbering. As we are seeing these numbering, these are all keys. These are given to identify a transaction or identify an amount. However, one can use the date, we can use numberings, we can use small phrases, or we can use dates to identify these numbers. These numbers can be identified using these keys. What we have done is to put the increase of cash on the left hand side and the decrease on the right hand side. The closing balance has been ascertained by deducting the total of payments from the total of left hand side. Such a treatment of receipts and payments of cash is very convenient. Here we talked about only one account named cash. Now let us see some T accounts wherein asset as well as liabilities. So transactions, you can refer these transactions. There is an increase and decrease of cash. Here cash is paid to creditor, as I've given an example of your friend's loan. Now our next topic, debit and credit. We have seen that in T accounts, increase and decrease, the increase and decrease entries are made on the left and the right hand side. So the decrease is given in the right hand side and the increase is given in the
left hand side of the accounts for assets respectively, and this is very important, vice versa for the liabilities. It is just the opposite for liabilities. But formally, accountants use the term debit DR to denote an entry in the left hand side and credit for an entry in the right hand side. So, for example, this is an account. The left hand side, this side is known as debit DR, and the right hand side is known as credit. This is done for by the accountants. The accountants use the term debit DR to denote an entry on the left hand side, and credit CR to denote an entry on the right hand side of the account. So this is an account, this is a T-shaped account. The left hand side is known as debit, the right hand side is known as credit. Any entry in the left hand side is known as debit, any entry in the left hand side in any entry in this left hand side is known as debit, and any entry in the right hand side is known as credit. We know that by deducting the total of liabilities from the total of assets, the amount of capital is ascertained, which is the accounting equation. Assets equals to liabilities plus capital, or assets minus liabilities. The asset minus liabilities equals to the capital. Assets minus liabilities equals to the capital. Assets plus liabilities, assets equals to liabilities plus stockholders equity. What is this stockholders equity? This stockholders equity is the capital. This is another name to the capital. Stockholders equity means capital. So the capital can also be denoted as contributed capital plus beginning retained earnings plus revenue minus expense minus dividends. Dividends are paid to the company's stakeholders. The stockholders, the shareholders of a company are paid dividends, revenues, expenses. So the contributed capital, that is contributed by the shareholders or the business owners, plus beginning of retained earnings, any earnings that is retained from the beginning, plus revenue minus expense minus dividend, gives us the stockholders equity or the capital. So here are examples of the accounting equation which you can refer for better understanding. Let's skip this portion. You can refer for better understanding. Now, our next topic or our next theory concept, transactions. What is a transaction? In the system of bookkeeping, students can notice that transactions are recorded in the books of accounts. We have been discussing from the starting, from day one. The transactions are noted or recorded in the books of accounts. A transaction is a type of event which is generally external in nature and can be determined in terms of money. ट्रांजैक्शन एक टाइप का इवेंट है जो कि एक्सटर्नल होता है, इंटरनली बिजनेस का अंदर कुछ बात नहीं है,
बिजनेस का और कुछ सेकंड पर्सन से एक रिलेशन है या फिर एक इवेंट जो कि एक सेकंड पर्सन से आउटसाइड द बिजनेस होता है, एक्सटर्नल इन नेचर एंड कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन होना जरूरी है। क्या क्या है? एक तो जनरली एक्सटर्नल इन नेचर एंड अदर वन इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। In an accounting period, every business has huge number of transactions which are analyzed in financial terms and then recorded individually. In an accounting period, एक business में huge number of transactions होता है, बहुत सारा transactions होता है। Asset को purchase करना, asset को sell करना, goods को sell करना, goods को purchase करना, salary को payment देना, rent payment देना, या फिर इंटरेस्ट को पेमेंट देना, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है जो कि बाद में या फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद एनालिसिस के हिसाब से एनालाइज करके अपने अपने अकाउंट्स में, अपने अपने नाम के अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया जाता है या फिर प्लेस किया जाता है। A transaction is a two-way process in which value is transferred from one party to another. एक ट्रांजैक्शन टू वे प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व है या फिर दो अकाउंट इन्वॉल्व है। A transaction is a two-way process in which value is transferred from one party to another. In it, either a party receives the value in terms of goods, etc., and passes the value in terms of money. आइदर वैल्यू आता है या फिर जाता है। एक पार्टी के लिए वैल्यू आता है तो दूसरी पार्टी के लिए वैल्यू जाता है। एक पार्टी गुड्स रिसीव करता है तो एक पार्टी कैश रिसीव करता है। Therefore, one can easily make out that in a transaction, a party receives as well as passes out the value to other. एक ट्रांजैक्शन में एक पार्टी रिसीव भी करता है और पे भी करता है, लेकिन फॉर्म चेंज होता है। एक पार्टी जो है उसके पास कैश आया तो फिर गुड्स गया, ये हो गया एक पार्टी, और एक पार्टी के पास गुड्स आया तो कैश गया, ये है दोनों पार्टी। इन दोनों को टोटल में मिला के, इन दोनों को एक साथ करके एक ट्रांजैक्शन बनता है। ये दोनों को मिला के एक ट्रांजैक्शन बनता है। For recording transaction, it is very important that they are supported by substantial document, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग बात किए थे। सोर्स डॉक्यूमेंट, एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि एक एविडेंस की तरह काम करे। For example, a purchasing invoice, bills, payslip, cash memo, etc. Transactions analyzed in terms of money and supported by proper documents are recorded in the books of accounts under double entry system. एक ट्रांजैक्शन जब वो मॉनेटरी टर्म्स में हो और उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो एक एविडेंस के रूप में, उसके बाद उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांजैक्शन यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ bookkeeping. To analyze the dual aspect of each transaction, two approaches can be followed: accounting equation approach, traditional approach. अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है assets equals to liabilities plus कैपिटल। जब इस फॉर्म में ये जो इक्वेशन है ये तो फॉलो होता ही है, लेकिन जब ट्रांजैक्शंस को इस फॉर्मेट में ही लिखा जाए उसे हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और एक अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि जस्ट लिखने के तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखा जाता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपने पेज के एंड में जाके। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग डिटेल में लिख लेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग भी ऐसे तरीके से ही होता है। एसेट्स इक्वल्स टू liabilities प्लस कैपिटल। ये सबसे ऊपर लिखा रहेगा। ये सबसे से मैं यहाँ पे से मुझे यहाँ पे लाना है। हाँ, ऐसा एक इक्वेशन होगा, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ये। सपोज मेरे पास एक फर्नीचर है जो मुझे सेल करना है। फर्नीचर है 10 रुपीज का। एसेट से 10 रुपीज हट जाएगा। उसके बाद उसके लिए एसेट में मुझे कैश मिला, एसेट में 10 रुपीज ऐड भी हो जाएगा। 10 रुपीज का फर्नीचर गया और 10 रुपीज का कैश आया। इक्वेशन सेम ही रहेगा। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक ही है ना, क्योंकि टोटल इफेक्ट जो है इसके वजह से टोटल इफेक्ट तो जीरो है, इसीलिए हो गया। मेरा सेकंड एग्जांपल, मैंने गुड्स सेल किया क्रेडिट में। नहीं, मेरा सेकंड एग्जांपल है मैंने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, या फिर लोन लेके मैंने एक एसेट को खरीदा। गुड्स भी मेरे लिए एसेट जैसा ही है। मेरे पास 10 रुपीज का एसेट आया और मेरे पास 10 रुपीज का लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया, लेकिन कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 रुपीज का एसेट बढ़ गया, 10 रुपीज का लाइबिलिटी बढ़ गया। इक्वेशन अभी भी अनचेंज रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। 10 रुपीज का चेंज, यहाँ पे 10 रुपीज का चेंज, यहाँ पे भी 10 रुपीज का चेंज, इफेक्ट सेम हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे बिजनेस में मैं 500 रुपया कैश इंट्रोड्यूस किया हूं। 500 रुपया कैश, उसके मतलब क्या? मेरा बिजनेस में एसेट बढ़ जाएगा 500 रुपया से। लाइबिलिटी को घंटा फर्क पड़ेगा, जीरो रहेगा। लेकिन कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल में 500 रुपीज हो जाएगा। कैपिटल में 500 रुपीज हो जाएगा। अभी भी अगर आप समझे तो
ये जो इक्वेशन है वो इक्वल ही रहेगा। ये जो इक्वेशन है ये टैली भी कर जाएगा। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग किया जाता है उसे हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो चलिए अब हम इसके थ्योरी नोट्स को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। The relationship of assets with that of liabilities and the owner's equity is the equation form is known as accounting equation. Accounting equation क्या है? What is accounting equation? Accounting equation is the relationship of assets with that of liabilities and owner's equity, that is the capital, in equation form is known as accounting equation. In that case, it is known as the accounting equation. Basic accounting equation comes into picture when sum total of capital and liabilities equalizes. What is the basis or what is the fact of accounting equation? The fact of accounting equation is when the sum total of capital and liabilities equalizes the assets. Sum total of capital and liabilities equalizes the assets. Where assets are what the business owns and capital and liabilities are what the business owes. लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी एक बिजनेस के लिए एक ड्यूटी है जो कि उसे पे बैक करना पड़ेगा। कैपिटल भी सिमिलरली एक बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी ही है जो कि उस बिजनेस का ओनर को पे करना पड़ेगा। बिजनेस को उस बिजनेस का ओनर को पे करना पड़ेगा। इसीलिए लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों ही बन गया एक तरीके का लाइबिलिटी। Under double entry system, every business transaction has twofold effect on the business enterprise, where each transaction affects changes in assets, liabilities, or capital in such a way that an accounting equation is completed and equated. Accounting equation है वो complete भी होगा और दोनों दिख से दोनों तरीके से equate भी हो जाएगा, that is equalize भी हो जाएगा. This accounting equation holds good at all points of time and for any number of transactions and events except when there are errors in accounting process. Until and unless there is an error in the accounting process, the accounting equation will always equate. जब तक अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ गलती हो जाए तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हर समय इक्वेट करता ही रहेगा, वो इक्वल होता ही रहेगा. उसे ही हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को टैली होना या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को इक्वेट होना. Let us suppose that an individual started business by contributing rupees 50 lakh and taking loan of rupees 10 lakh from a bank to be payable after 5 years. He purchased furniture costing rupees 10 lakh and merchandise worth rupees 50 lakh. For purchasing the merchandise, he paid rupees 40 lakh to the suppliers and agreed to pay balance after 3 months. Assume that all these transactions and events occurred at two base point of time. The contribution by the owner is termed as capital. The borrowings are termed as loans or liabilities. Whenever the loan is repayable in the short run, say within 1 year, it is called a short-term loan or liability. From this point of
point we are knowing or we are coming to know about many definitions. The contribution by the owner is known as capital. Borrowings are termed as loans or liabilities. Whenever loan is repayable in the short run, say within 1 year, it is known as short-term loan or liability. On the other hand, if loan is repayable in 4 to 5 years or more, it should be called as long-term loan or long-term liability. Some other short-term liabilities relating to credit purchase of merchandise are popularly called as trade payables. Short-term liabilities relating to credit purchase of merchandise popularly known as trade payables. And for other purchases and services received on credit as expense payable. These short-term liabilities are also termed as current liabilities. On the other hand, money raised by the money raised has been invested in two types of assets: fixed assets and current assets. Furniture is a fixed asset. If it lasts long, say more than 1 year, and has utility to the business, then it is known as fixed asset. While inventory and cash balance, inventory and cash balance will not remain fixed for long. As soon as the business starts to roll, these are current assets. Often, the owner's claim or fund for the business is called equity. The owner's capital, owner's claim, or owner's fund is also called equity. Owner's claim implies capital invested plus any profit earned minus any loss sustained. ओनर्स क्लेम क्या है? वो है इन्वेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स. उसके तरीके से और या फिर उसको अरेंज करके आएगा इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. क्यों? Liabilities equals to long term liabilities plus current liabilities. ये क्यों आएगा यहां पे? क्योंकि liability equals to long term liability plus current liability. long term liability plus current liability equals to liability. इसीलिए हम लोग उसे अरेंज करके यहां पे लिख सकते हैं और उसी को हम लोग अगर एक फॉर्मूला या फिर एक इक्वेशन के तरीके से लिखे LHS RHS से हम लोग इसे एक फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इसे देख लेना. अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. आई होप आप समझ गए होंगे, मेरे एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे. इसके बाद इसे पढ़ने के बाद अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. इलस्ट्रेशन को भी सॉल्व कर लेना. इलस्ट्रेशन आपको खुद को सॉल्व करना है और आपको समझ भी जाएगा. बहुत इजी है. नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग और traditional approach in accounting or recording a transaction. Under traditional approach of recording transactions, one should first understand the term debit and credit and their rules. The term debit and credit has already been explained previously. We have explained, we have learned, we have discussed about these two terms, debit and credit. Transactions in the journal are recorded
on the basis of the rules of debit and credit only. Transactions in journal are recorded on the basis of debit and credit only. For the purpose of recording, these transactions are in three types: personal transactions, transactions relating to assets and properties, transactions relating to expense, losses, incomes, and gains. So, now classification of accounts. There are three types of accounts: personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Personal account can be divided into three more types: natural person, artificial or legal person, and representative. So, our first is personal accounts. Personal accounts relate to persons, trade receivables, and trade payables. जितना भी पर्सन का नाम अकाउंट्स में आएगा या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा वो आएगा पर्सनल अकाउंट्स में. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर श्याम इज अ डेटर. मिस्टर श्याम अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट होगा. मिस्टर मिस्टर SJL इज अ क्रेडिटर. मिस्टर SJL अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. Example would be the account of Ram and Co., a credit customer, or the account of Javeri and Co., a supplier of goods. The capital account is the account of the proprietor and therefore it is also personal, but adjustment on accounts of profits and losses are made in it. The account is further classified into three categories: natural personal account, artificial or legal personal account, and representative personal account. What is natural personal account? It relates to the transactions of human beings such as Ram, Rita, etc. What is artificial legal person? For business purpose, business entities are treated to be a separate legal person. We all know that a business entity is treated as a separate legal person, apart or different from its owners. In that case, an account in the name of a business, in the name of a business enterprise, is the artificial or legal personal account. They are recognized as persons in the eyes of law. Recognized as a person in the eyes of law for dealing with other persons. For example, government, companies, private or limited, clubs, cooperative societies, etc. Next is representative personal account. These are not in the name of any person or organization, but are represented as personal accounts. रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कुछ भी पर्सन का नेम नहीं होता है. नो पर्सनल नेम इज इन्वॉल्व, बट दे आर ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट और प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट. कैपिटल अकाउंट is a personal account of the owner of the business, but as there is no transaction, there is no specific transaction or day-to-day basis transaction between the business and the owner, it is called as the representative personal account. Next, the impersonal accounts, which consists of real accounts and nominal accounts. What are real accounts? Real accounts are the accounts which relate to assets of the firm but not debt. Real accounts relates to the assets of the firms, only the assets of the firms. For example, accounts regarding land, building, investments, fixed deposits, etc. are real accounts. Cash in hand, cash and bank are also real. What are nominal accounts? Nominal accounts are such accounts those are related to names of the accounts और नाम से related हो, एक account का एक specific name हो. For example, एक expense का name. Accounts which relate to expenses, losses, gains, revenue, etc.
लाइक सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट अकाउंट का एक नाम है सैलरी। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड एक नाम है अकाउंट का, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। Nominal account is temporary account. Why temporary account? Because these are transferred to the profit and loss account while calculating the profit and loss of the business, and at the time of calculation these accounts are finished off, or they are means they are written off, or net results are taken. Now comes the golden rule of accounting. If we are into accounting, if we are into chartered accountancy, we all must know about the golden rules of accounting. There are 4 golden rules of accounting. All the above classified accounts have 2 rules each, one related to debit and one related to credit for recording the transactions, which are termed as golden rules of accounting, as transactions are recorded on the basis of double entry system. Type of account: personal account. Account to be debited is the receiver, account to be credited is the giver. In the case of a real account, what comes in is debit and what goes out is credit. In the case of a nominal account, expenses and losses are debit, incomes and gains are credit. So why I said 4? For your understanding, why I said. Your question would be why I said. Expense and losses, incomes and gains. Okay, understood. But what comes in? This too is related, isn't it? Receiver, for a receiver, an asset comes in, right? For a receiver is asset comes in. That is why what comes in and receiver are treated as the same, and what goes out and giver are interrelated also. What goes out is same or similar for a giver. That is why I said 4, not 6. But this is very important. This topic is very important. You should understand. The receiver is debited, the giver is credited. एक गिवर क्रेडिट होता है, एक रिसीवर डेबिट होता है. What comes in is debit, what goes out is credit. जो भी अंदर आता है वो डेबिट होता है, जो भी चला जाता है वो क्रेडिट होता है. Expenses and losses are debit. एक्सपेंस या फिर लॉस डेबिट होता है, लेकिन इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट. अब आप ये कह सकते हो कि इनकम भी तो अंदर ही आ रहा है. नहीं, इनकम होता है. इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट. इनकम के लिए कैश आता है, कैश डेबिट ही होता है. अगर आप समझोगे, कैश आता है, इसीलिए व्हाट कम्स इन इज डेबिट. कैश आता है, डेबिट होता है. इनकम हो जाता है, इनकम आता नहीं है, इनकम जनरेट होता है, इसीलिए इनकम क्रेडिट होता है. क्यों? इनकम एक नॉमिनल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है. ये था पुराना हिसाब से. ये जो अकाउंट्स है, रेवेन्यू, ये जो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये पुराना हिसाब से डिवीजन हुआ था, जो कि पुराना अकाउंटेंट्स किए थे ये डिवीजन को. अब आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट्स इन द ट्रेडिशनल अकाउंट्स. रियल, ये जो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स है, ये सब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस था. अब थोड़ा मॉडर्न हो चुका है, थोड़ा आसान हो चुका है. नाउ लेट अस सी द मॉडर्न and more acceptable classification of accounts. Type of account:
This is asset. Previously, asset was a real account, but now asset account is a different type. Liability account. It was also real, but now it is a different type. Capital account, revenue account, expenditure account, withdraw account. रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, विथड्रॉ, इन तीनों को मिला के होता था नॉमिनल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट था एक पर्सनल अकाउंट. लाइबिलिटी और एसेट्स था एक रियल अकाउंट. तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना, ये जो एसेट था, एसेट अकाउंट था, एक रियल अकाउंट था. लाइबिलिटी अकाउंट एक रियल अकाउंट था. कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट था. इसके बाद रेवेन्यू एक नॉमिनल अकाउंट था. एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट था. विथड्रॉ नॉमिनल अकाउंट था. इसीलिए ये जो इसका जो अरेंजमेंट्स या फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी सिमिलर रहेगा. एसेट अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट. हम लोग जानते हैं अकाउंट्स टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज. डेबिट कब होगा? जब इंक्रीज होगा. क्रेडिट कब होगा? जब डिक्रीज होगा. नाउ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज का नॉर्मल फॉर्म में क्या बैलेंस रहता है? क्रेडिट. डेबिट कब होगा? जब डिक्रीज होगा. क्रेडिट कब होगा? जब इंक्रीज होगा. कैपिटल क्या बैलेंस है? कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस. डेबिट कब होगा? जब डिक्रीज होगा. क्रेडिट कब होगा? जब इंक्रीज होगा. रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या अकाउंट है या फिर क्या बैलेंस है? रेवेन्यू इज अ क्रेडिट बैलेंस. डेबिट कब होगा? जब डिक्रीज होगा. क्रेडिट कब होगा? जब इंक्रीज होगा. एक्सपेंडिचर इज अ डेबिट बैलेंस. विथड्रॉ इज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस. विथड्रॉ और एक्सपेंडिचर एक सेम तरीके से आप कह सकते हैं, इसीलिए ये दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम है. एक्सपेंडिचर कब डेबिट होगा? जब इंक्रीज होगा. कब क्रेडिट होगा? जब डिक्रीज होगा. इसीलिए एक्सपेंडिचर और विथड्रॉ का ये जो ट्रीटमेंट है, ये दोनों सेम ही है. इसीलिए इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है, ये भी सेम ही रहता है. नाउ आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे. प्लीज सॉल्व दिस अलोन. नाउ our next topic is journal. This portion would be completed in our next part, in our part 2 video of this unit. So, for watching this video, thank you very much. If you have any doubt, please tell me in the comment section. And also, if you liked this video, please give this video a like and do subscribe to my channel. Thank you for watching. Keep subscribed, stay safe, stay healthy, and keep studying. Thank you. Thank you very much.